तो इनसे हल करके सर अब बिल पे आ जाइए, मेहरबानी कर। मौलाना असद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी देते। मैं जनाब स्पीकर वज़ीर ख़जाना साहब से भी पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, दरख्वास्त भी कर चुके हैं कि जो फाटा के हवाले से जब उनका इंज़माम हुआ था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो उस वक्त उनसे एक किया गया था कि आपको 10 साल में इतने अरब रुपए देंगे। और फाटा के इंज़माम पर हमारा मौक़िफ़ या उनका मौक़िफ़ इससे कतई कि वो लोग इंज़माम के हक़ में थे या इंज़माम के हक़ में नहीं थे, यहाँ पर सियासी जमातों का मौक़िफ़ तमाम पार्लियामेंट को मालूम है। इसके साथ साथ 5 साल की टैक्सेस में उनको छूट दी गई ताकि इंज़माम के बाद जो उनको फैसिलिटेट किया जा सके यहाँ से, उसमें उसकी मुद्दत पूरी हुई और उस दौरान खैबर पख्तूनख्वा के हमारे आईन के होंगे, उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ों में सनतकारों को की, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें उस वक्त फाटा के इंज़माम के हवाले से जो फ़ज़ाइल सुनाए जाते थे कि ये उनके बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए है और इससे बहुत खुशहाली आएगी, खुसूसन फाटा के अंदर। उस वक्त भी हमारा मुतालबा था कि फाटा के लोगों को फाटा के अंदर चाहिए और उनसे पूछकर इस फैसले को वहाँ पर लागू करना चाहिए कि फाटा के लोग क्या चाहते हैं। फिर 5 साल की टैक्स की छूट हुई। गुज़िश्ता जब उनकी मुद्दत पूरी हुई, सेनेट के अंदर मज़ीद 5 साल की छूट उन टैक्सेस में उनको दिलवाई गई। आज मैं इसलिए ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ कि हमने कैबिनेट में वज़ीर ख़जाना साहब से और वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त की थी कि फाटा के सनतकार जो हैं वो अभी भी आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी सनतों के दवाम का मसला है, हमें 1 साल की छूट दी जाए। उसके बरअक्स गुज़िश्ता 2019 और 20 में उन 5 सालों में जो छूट दी गई थी उसका भी है कि आपने गुज़िश्ता बरसों में एक साल आपने देना है। मेरा मुतालबा ये है कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान अपने तमाम तर वादे फाटा के साथ पूरे नहीं कर लेते, तब तक दूसरी जानिब उनको जो सहूलतें दी गई थी उनको भी उसी तरह बरकरार रखा जाए और किसी किस्म के यकतरफा फैसले को, अगर यहाँ से अब वहाँ पर न रेवेन्यू का रिकॉर्ड है जनाब स्पीकर, वहाँ पर न डीसी मुअस्सर है, वहाँ पर अदालती निज़ाम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि फाटा इस वक्त कौन से निज़ाम के अंदर वहाँ के लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये बहुत हसास मसला है। मैं वज़ीर ख़जाना साहब के मालूमात में, उनके मालूमात में ये पहले भी होंगी, लेकिन इस पार्लियामेंट को ये फैसला करना होगा कि वो फाटा के लोगों को इस बात में, जब दहशतगर्दी ख़त्म हुई और उनके मुताबिक जब 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, हम इस सफ में थे, आपके इत्तेहादी थे, हमारा नुक्ते नज़र आपसे अलग था। आज जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, हम आपके इत्तेहादी हैं, हमारा आज भी फाटा के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद से नुक्ते नज़र अलग है। आज तो 5 साल गुजर जाने के बाद फाटा के अंदर वो खुशहाली भी आ गई बकौल उन लोगों के जो इंतज़ाम चाहते थे। तो फिर मेरा मुतालबा ये है इस पार्लियामान से कि आज 5 साल के बाद जब फाटा के लोग खुशहाली के उस दौर से गुजर रहे हैं, आज फाटा में इंज़माम करा दें, आज फाटा में रेफरेंडम करा दें कि वो इंज़माम चाहते हैं या अपने आप को अलग सूबा बनाना चाहते हैं। मेरा मुतालबा है कि हुकूमत सोचे। फाटा के लोग बहुत मुश्किलात में हैं। आज सैटेलाइट से उनके रेवेन्यू के और ज़मीनों के मसाइल जो हैं वो देखे जा रहे हैं। चाहिए ये
कि हुकूमत फाटा की सरजमीन पर जाकर ये तमाम मसाइल खुद देखे और खुद जाने कि वहाँ के लोगों की मुश्किलात क्या हैं और उनका हल क्या है। एक मसला ये है। दूसरा ये है जनाब स्पीकर कि कल मेरी वजारत के हवाले से एक मेंबर साहब ने यहाँ पर बात की। मैं नहीं चाहता था और एक मरतबा पहले भी मेरे पास ये बात आई, लेकिन चूंकि वो इस फोरम पर नहीं थी तो मैंने उसका जवाब भी मुनासिब नहीं समझा। कल उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की। जहां तक रिक्रूटमेंट की बात है जनाब स्पीकर, 1 लाख नफूस पर एक पोस्टमैन काम कर रहा था। तमाम चीज कि जब एक मरतबा आपने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी, मसला जेर बहस है और वहां पर ऐसा तो नहीं है कह दूंगा या कोई और जुबानी बात कह देगा। उस कमेटी का जो भी फैसला आए उसको पार्लियामेंट में जरूर लाया जाए ताकि इस मसले को इंतजामी मसला है और जो भी उसमें सजावार हो, चाहे दावा करने वाला उसको भी बरमरा माफी मांगनी चाहिए फिर, और अगर कोई गलती करने वाला है तो उसको भी सजा जरूर देनी चाहिए। किसी को भी रियायत इंतजामी उमूर में नहीं देनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं इतना भी अर्ज कर दूं कि वहां पर इन्होंने लोग और फला जगह के लोग और फला जगह के लोग चतराल के अंदर लगाए गए हैं। आप भी जानते हैं, यहाँ पर वज़रा भी जानते हैं कि पोस्टल सर्विसेज या दीगर वजारतों की रिक्रूटमेंट का एक तरीक़ाकार होता है। एक सर्कल होता है जो उस डिवीजन के डोमिसाइल लोग रिक्रूटमेंट वहां पर उनका इस्तेहकाक होता है। एक डिवीजन का बंदा अगर दूसरे डिवीजन में जिसकी रिक्रूटमेंट पूरे पाकिस्तान में हुई हो, मैं वजारत से मुस्ताफी हो जाऊंगा, लेकिन अगर एक सहूलत देता हूं जनाब स्पीकर आपको, मैं सियासी इंतकाम का कायल नहीं हूं और न मैं जाती चीजों में पढ़ने का कायल हूं। लेकिन दो बातें कल की गई, एक ये कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट्स थे और दूसरा पोस्टल सर्विसेज हवाले से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले से मुश्किलात, यकीनन पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ था और उन मुश्किलात से पाकिस्तान आज भी नहीं निकला। जनाब स्पीकर, हम इस कि अगर हम किसी के साथ एक इत्तेहाद में हैं, हम उनको कायल करेंगे, मुतालिका फोरम्स पर कायल करेंगे, बंद कमरों में कायल करेंगे। अगर हमारी बात नहीं तस्लीम की जाती तो हम फ्लोर ऑफ द हाउस अपने नुक्ते नज़र को कौम के सामने जरूर रखेंगे कि हमारा इस पर यह नुक्ते नज़र था। 1000 शिकायतें हमें मुस्लिम लीग से हो सकती हैं, 1000 गलतियां मुस्लिम लीग के अंदर हो सकती हैं, 1000 शिकायतें हमें पीपल्स पार्टी से हो सकती हैं, 1000 पीपल्स पार्टी में हो सकती हैं, लेकिन हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है जनाब स्पीकर कि हम इन मसाइल को ऐसे वक्त में उछालें कि जिस दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है उसमें हमें आगे उन मुश्किलात से मुल्क को निकालने की बजाय हम उसको मजीद दलदल में फंसा दें। और ये हुकूमती इत्तेहाद बैठा हुआ है। मैंने अपने पोस्टल सर्विसेज के अंदर, मैं ज्यादा तवील नहीं करूंगा अपनी मजलिस को, लेकिन रैंकिंग में 62वें नंबर पर था जनाब स्पीकर। एक साल के अंदर, और ये कई सालों से 62वें नंबर पर था, और एक साल के अंदर हम उसको 54 नंबर पर रैंकिंग में ऊपर लाए हैं। और ये है हमारी वजारत के उन अफसरान और कारकुनान का किरदार एक साल का। दूसरा,
हैदराबाद से सक्कर मोटरवे का इफ्तिताह जनाब वज़ीर आज़म ने खुद किया। जो मशरकी रूट था सीपैक का, जिसको रोका गया 4 साल तक, और मगरबी रूट का हमने गवादर के लिए यारक से सग्गू का इफ्तिताह किया। हमने 50 से ज़ायद नए प्रोजेक्ट यहाँ पर हमने आज इस बजट में शामिल किए हैं, उन पर भी इंशाअल्लाह अमलन काम होगा। आज मुतलकन बात कर दी जाती है कि हमारा फलां रोड और हमारा फलां रोड, उसकी वजूहात मुख्तलिफ है जनाब स्पीकर। उसकी वजूहात हमसे पूछी जाती, हमने उसके जवाबात भी यहाँ पर दिए हैं कि कहाँ पर कंट्रैक्टर का मसला है, कहाँ पर लिटिगेशन का मसला है, कहाँ पर पिछली हुकूमतों का मसला है। पेशावर से लेकर लाहौर तक जीटी रोड के जितने भी पीरियाडिक मेंटेनेंस के काम थे उस पर आगाज हो चुका है और बाकी मानदा मंसूबों पर आगाज हो रहा है। 1 साल जरूर लगता है जब आप इन तमाम चीजों को की मंसूबाबंदी करते हैं और उसको ग्राउंड पर ले जाते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, खुर्शीद शाह साहब गवाह हैं, मैंने इनको खुद बुलाया, मुस्लिम लीग के वज़रा गवाह हैं। सन 94 में NHA साल या 2 साल की थी गालिबन, और उस जमाने से मुख्तलिफ हुकूमतों ने और मुख्तलिफ कोर्टों ने एक फैसला किया जनाब स्पीकर कि कभी मुलाजमीन को मुस्तकिल बुनियादों पर नौकरी का कहते, कभी उनको कंट्रैक्ट कहते, कभी उनको निकालते, कभी उनको वापस करते। मेरी वजारत के अंदर 1 साल के अंदर कतई नजर कि वो किसकी हुकूमत में NHA की मुलाजमीन को मुलाजमतें मिली, 1 साल के अंदर 2000 के करीब कंट्रैक्ट मुलाजमीन को जिनका हक था कि वो रेगुलर हों, उनको हम रेगुलर किया है और अपनी अथॉरिटी को नेशनल हाईवे काउंसिल की अथॉरिटी को इस्तेमाल किया गया है। इस पार्लियामान की ग्रीवेंस कमेटी में NHA का कोई मुलाजिम नहीं गया। इस वजारत ने खुद उन मुलाजमीन के मसाइल को हल किया है। चाहिए था कि वजारत के इस रुख को भी पब्लिक के सामने पेश किया जाता, क्यों नहीं पेश किया गया? पोस्टल सर्विसेज गुज़िश्ता 3-4 सालों में 4.5 अरब रुपए खसारे में जा रहा था, आज वो खसारे से निकल गया है और यूनाइटेड पोस्टल यूनियन के जो रिकग्नाइज इदारा है यूनाइटेड नेशन का, उसने इस कारकर्दगी को तस्लीम किया है कि उसको 62वें नंबर से 54वें नंबर पर लाया है। अगर किसी को मसला है, और मसाइल यकीनन बहुत ज्यादा है जनाब स्पीकर, मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, मसाइल यकीनन ज्यादा हैं, सवालात करने वालों को अगर यहां पर बिठा दिया जाए हल उनके बस में भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हौसला अफजाई की बजाय सरकारी अफसरान की हौसला शिकनी करें। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं अज़राह तफन्नुन, एक आईनी और कानूनी मसला है, लेकिन अज़राह तफन्नुन कह दूं कि मैं उस मिजाज का आदमी हूं कि जनाब स्पीकर 63A की एक तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की कि पार्टी के सरबराह का फैसला आखिरी फैसला होगा, वरना तो पार्लियामेंट की रुकनीत आपकी ख़त्म हो जाएगी। और फिर कहा कि 63A की दूसरी तशरीह में कहा कि पार्लिमानी लीडर का फैसला आखिरी फैसला होगा। फाजिल मेंबर जिसने कल एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बात की, वो मुझसे भी कह सकते थे, वो मुझसे कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बात की और मैं कहता हूं उनसे कि ये मेरा मिजाज नहीं है, वरना 63A की पहली तशरीह की जद में भी आप आते हैं और 63A की दूसरी तशरीह की जद में भी आप आते हैं। फिर आप फैसला करें कि वो फाजिल मेंबर, अगर हम सियासी इंतकाम की बात करते तो वो आज आप बताएं कि वो पार्लियामेंट के रुकन रह सकते हैं या नहीं रह सकते। और आज भी फाइनेंस बिल पर उन्होंने वोट करना है, तो फिर उसके बाद भी आप फैसला कर लें कि क्या उनकी रुकनीत इस पार्लियामेंट की बरकरार रह सकती है या नहीं रह सकती। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं जनाब स्पीकर कि हम जमीयत उलमा इस्लाम इस वजारत को इस मुल्क की अमानत समझती है। जहां पर जायज़ तनकीद होगी
वहाँ पर आपको जवाब दिया जाएगा और मुतमईन किया जाएगा। हमारे लिए दुआ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। हमारे ऊपर बेजा तनकीद और हौसला शिकनी, ये मेरी हौसला शिकनी नहीं है, ये उस इदारे की हौसला शिकनी है कि जहाँ पर एक पोस्टमैन 1,00,000 लोगों को सर्विसेज दे रहा था, और आज अगर उस पोस्टल सर्विसेज को मैन पावर दी जा रही है तो उनको अगर कहीं पर कोई मसला है तो उसको मुतालिका फोरम्स में उठाएं, और वजारत के कलमदान जिनके पास है, हुकूमत और अफसरान, इंशाअल्लाह वो आपकी इस तशनगी को पूरा करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आज इस पर इजाज़त चाहूँगा और मुस्तकिल तौर पर इंशाअल्लाह मवासलात की वजारत के हवाले से ईद के बाद जब आप इजलास बुलाएंगे तो एक तफसीली कारकर्दगी 1 साल की वो ज़रूर हम बयान करेंगे। मेरी गुजारिश होगी फाजिल मेंबरान से, देखें अगर जवाब शुरू को देखें, अगर आप लोगों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आज दिन भी करना है तो फिर आपको 2 दिन और रहना पड़ेगा। हाथ उठा के वादा करें कि आप 2 दिन इधर ही हैं तो करें। अब भाई पहले ये अपना बजट तो पास कर लें, प्लीज प्लीज, मेहरबानी फरमाए। नहीं आप तशरीफ रखें ना, कल आपने बात कर ली, उन्होंने जवाब दे दिया। आप लोग तशरीफ रखें अपनी अपनी सीटों पे प्लीज। ठीक है, मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं पहले बिजनेस ले लूं। पहले बिजनेस है, पहले बजट है पाकिस्तान का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा जी। जनाब सरदार अयाज सादिक साहब, शुक्रिया, आप तशरीफ रखें प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मेरा ख्याल है कि हमारे फाजिल दोस्तों ने हज की तैयारी भी की हुई है, जाना भी है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपसे कहा जाए कि कुर्बानी के बकरे भी आप ले गए। तो ये अगर मेरे भांजे, भतीजे और फाजिल लीडर ने किसी का नाम लिया तो बात हो। पर्सनल एक्सप्लेनेशन तब दी जाती है किसी का नाम लिया गया, तो पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन डज नॉट अराइज हियर। तो प्लीज प्रोसीडिंग्स को चलाएं, लोग बेचैन हो रहे हैं बकरे लेने के लिए और हज पे जाने के लिए। शुक्रिया जी। सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, टू मूव आइटम नंबर 5। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। एक लाइन में कल मेरे भाई और मोअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब नहीं थे, मैंने जो इशू रेज हुई मैंने ऑफ कैमरा उसको हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन आई एम ग्लैड कि आज वो खुद तशरीफ रखते हैं। उन्होंने बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी बयान को यहाँ पेश किया है और ऑफर किया है कि बजट सेशन के बाद जब हम नेक्स्ट सेशन बुलाएंगे तो रेडी हैं वो, तो मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। जहाँ तक उन्होंने फाटा के हवाले से कहा, वो काबीना का हिस्सा है। इंशाल्लाह वज़ीर वापस आ जाए, हम बैठ के इसको सैर असर बहस करेंगे और इसके ऊपर हम रास्ता निकालेंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको श्योर करता हूँ। ये कुछ मजबूरियाँ आपको भी पता है, लेकिन उसकी वजह से है। जनाब स्पीकर, आई बेग टू मूव दैट ए बिल टू गिव एन इफेक्ट टू दी ये आपकी अंग्रेजी टाइपिंग सारी गलत है जी, आई एम सॉरी जी। ये sir let me just phrase it, sir. I beg to move that a bill to give effect to the proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2023 and to amend certain laws, the finance bill 2023 be taken into consideration at once. Okay, there is a motion for referral of the bill to the Council of Islamic Ideology standing in the name of Maulana Abdul Akbar Chitrali MNA. Now I call on Maulana Abdul Akbar Chitrali to move the motion. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कौमी असम्बली में पेश करदा सूरत में माली बिल 2023 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 229 के तहत मशवरे के लिए इस्लामी नजरियाती कौंसिल के हवाले किया जाएगा या कि मज़कूरा बिल इस्लामी तालीमात के खिलाफ है या खिलाफ नहीं है। जी, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, डू यू अपोज इट? Sir, oppose जी। Now I put the motion. जी जरा मुख्तसर करेंगे मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब, प्लीज ब्रीफ। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का फाइनेंस बिल है और इस्लाम एक आईन है जिसको दस्तूर पाकिस्तान कहा जाता है और उस आईन के आर्टिकल 38F के तहत ये कहा गया है कि सूदी निज़ाम को ख़त्म करके जल्द ख़त्म करके उसके बजाय इस्लामी माशी निज़ाम नाफिज किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये जनाब स्पीकर, इसमें यह लिखा गया है कि ऐसा माहौल तरतीब दिया जाएगा, बनाया जाएगा जो मुसलमानों के लिए सहल हो, आसान हो, जहां जिंदगी गुजारना। नंबर 2। नंबर 3, जनाब स्पीकर, विफाकी शरई अदालत ने गुज़श्ता साल 26 रमज़ानुल मुबारक को एक फैसला दे दिया कि 31 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2027 तक माशी निज़ाम को सूदी निज़ाम के बजाय इस्लामी निज़ाम पर तब्दील किया जाए। अब ये बात है कि उसके खिलाफ कुछ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में चली गई। उन अपीलों में हुकूमत पाकिस्तान के 2 इदारे भी शामिल थे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हमारे मौजूदा हुकूमत ने यह तो अच्छा किया, मैं इस पर उसको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने अपने दरखास्तें, अपीलें उस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी शरई अदालत ने दिया है, उस सुप्रीम कोर्ट ने को हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी फैसले को मान लिया। जब मान लिया, अब यह है कि एक तो दस्तूर पाकिस्तान के खिलाफ यह बिल है क्योंकि इसमें सूद है। नंबर 2, विफाकी शरई अदालत ने जो फैसला किया है उस फैसले के बाद, उनको मानने के बाद फिर यह है कि फैसले के खिलाफ ये अगर बिल लाते हैं तो इसका मतलब है कि फैसले को नहीं, ये बिल मैंने लाया है और इस बिल को आप मेरे इस अमेंडमेंट को आप पास करें और सभी भेज दें और पास करें। उसमें भी आइन में भी यह है कि भेज दिया जाएगा। ठीक, okay. Now I put the motion as moved by Maulana Abdul Akbar Chitrali to the House. It has been moved that the finance bill as introduced injunction of Islam. Now I put the motion to the House. All those members in favor of the motion may rise in their seats. मौलाना साहब आप खुद तो खड़े हो जाएं। ओके ओके बस हो गया, आप खड़े हैं। One member rose in favor of the motion. Consequently, the motion is rejected, being less than the votes of the 2/5 of the total membership of the Assembly in favor of it. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023 be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2, amendments. There are 2 amendments in clause 2. In the name of Senator Muhammad Ishaq, Minister for Finance and Revenue. Second amendment standing in the name of Ms. Saira Bano and Maulana Abdul Akbar Chitrali MNAs. Now I call upon Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to move the amendment. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। Sir, I beg to move that in the Bill 2023 as introduced in the National Assembly in clause 2, the following shall be substituted, namely, amendment to the Petroleum Development Levy Ordinance 1961
In the fifth schedule, column number 1A, serial number 1 in column 4, for the figure 50, the figure 60 shall be substituted. B, again serial number 2 in column 4, for the figure 50, the figure 60 shall be substituted. Now, Speaker. Thank you. Now I call Janab Maulana Abdul Akbar Chitali to move the amendment. जी हाँ, मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कौमी असम्बली में पेश करदा सूरत में माली बिल 2023 में शेख नंबर 2 में एक नए जुमला शर्तिया का इजाफा कर दिया जाएगा, यानी मगर शर्त यह है कि हुकूमत ऐसी तरमीम के 30 दिनों के अंदर कौमी असम्बली से किसी तरमीम की मंजूरी हासिल करेगी या बसूरत दीगर उसे मनसूख या जैसा भी सूरत हाल हो। Minister for Finance and Revenue. I put amendment as moved by Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue. The question is that the amendment as moved by be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted. Now, as moved by Ms. Abhi Chitra, Abdul Akbar Chitrali. जी मैं बात करता हूं इसमें मुझे बात करने की इजाजत दी जाए। जी देखें, आईन के आपने मकासद के लिए मजलिस शुरा पार्लियामेंट के एक्ट के अलावा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ताहम माजी में मुख्तलिफ कवानीन में ये इजाज़त ली जाती है कि हुकूमत जब चाहे किसी भी टैक्स की शरह बढ़ा सकती है। पहले ये सिर्फ इंतहाई ज़रूरी और इमरजेंसी सूरत हाल के लिए था, लेकिन ये हर एक कानून में ऐसे इजाज़त दी जा रही है गोया कानून साजी जो पार्लियामान का बुनियादी काम है उससे कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। इस तरह अब पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोलियम लेवी आर्डिनेंस 1961 की सेक्शन 7 के तहत हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की शरह बढ़ाने का इख्तियार हासिल है। इसलिए मैं तजवीज़ मैंने पेश की कि सेक्शन 7 में यह शर्त शामिल किया जाए कि लेवी में किसी कस्म की तब्दीली या दूसरी सूरत में हुकूमत 30 दिन के अंदर असम्बली से मंजूरी लेने की पाबंद होगी और कौमी असम्बली उससे मुस्तरद करते हुए ये कलदम हो जाएगी। और ये कौमी असम्बली की जनाब इज्जत काम करने के लिए नहीं है। ये ऐवान जो है ये कानून साज, अगर आप कोई काम करते हैं तो आइन के खिलाफ। Amendment as moved by Maulana Abdul Akbar Chitrali and other to the House. The question is that amendments as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. Consequently, the amendment is rejected. Now I put clause 2 as amended to the House. The question is that clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 2 as amended stands part of the bill. Insertion of new clause 2A. There is an amendment of Maulana Abdul Akbar Chitrali MNA for insertion of new clause 2A. Now I call upon Maulana Abdul Akbar Chitrali to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कौमी असम्बली में पेश करदा सूरत में माली बिल 2023 में शेख नंबर 2 के बाद नई शेख नंबर 2 अलिफ शामिल कर दी जाए, यानी अरकान पार्लियामेंट तनख्वाह अलाउंस एक्ट 2000 नंबर 27 बाबत 1974 में तरमीम। अरकान पार्लियामेंट तनख्वाह अलाउंस एक्ट 1974 नंबर 27 बाबत 1974 में दफा नंबर 13 अलिफ में ज़ैली दफा पैरा वाव में यह इबारत 13 सीसी को इबारत 12 सीसी ता 16 सीसी से तब्दील कर दिया जाएगा। ज़ैली पैराजात नंबर 2 3 हज़्फ कर दिए जाएंगे और बाकी पैराजात का हस्ब नंबर शुमार लगाया जाएगा। मौजूदा ज़ैली पैरा 4 में सरकारी स्टाफ का
स्टाफ कार ड्राइवर ही बाहिर डे का हकदार होगा। ये सर पहले कोई डिस्कस नहीं हुई, मेरा ख्याल है अब मेरे लिए तो ये पैराशूटेड आइटम है, अब इसको बाद में देख लीजिए। ये आपका अपना इंडिपेंडेंट कानून। मिनिस्टर साहब, इसमें कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो है नहीं है जी। नहीं, मैं ऐसे 1200 के नहीं बनते तो फिर हमें लोगों पे जो है ना फ्यूल का जो है वो आ जाता है इम्पैक्ट। जी ठीक जी जनाब स्पीकर, ये इस थैंक यू। आपने तो अभी शुरू किया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। नहीं, ये सरदार साहब अच्छा काम भी कभी कभी करते हैं। जनाब स्पीकर, हवस के लिए है, यहाँ जो कौमी असम्बली के ड्राइवर्स हैं, जब आप स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन को गाड़ी दे देते हैं, एक तो यह है कि वो 1300 सीसी वाला खत्म हो गया, उसमें 1200 सीसी जो है उसके अखराजात भी कम होते हैं बजाय 1300 सीसी के। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि इसका जो यहाँ के जो ड्राइवर हैं ऑलरेडी तनख्वाह ले रहे हैं, फिर बात ये वो तो ड्राइवर जो है, आपको पता है कि तर्ज अमल ड्राइवर का क्या होगा उस गाड़ी के साथ, और अगर महकमे के ड्राइवर खुद हों तो जिम्मेदार होगा उस गाड़ी के मेंटेनेंस का, उस गाड़ी के हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। थैंक यू, शुक्रिया। नाउ आई पुट द अमेंडमेंट एज मूव्ड बाय Maulana Abdul Akbar Chitrali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Again I put the amendment. Thank you. Minister Sahab ne oppose nahi kiya. I put the amendment as moved by Maulana Abdul Akbar Chitrali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. मिनिस्टर साहब ने इसको अपोज नहीं किया है, प्लीज। अगेन ओके, ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. Clause 3 amendments. There are also Senate recommendations on clause 3. There are 5th amendment in clause 3. First amendment stands in the name of Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Revenue. Asiya Azim, Dr. Muhammad Afzal Khan Dhandla and Mr. Nawab Sher Wasir, MNA. Third amendment stands in the name of Ms. Wajiha Kamar, Dr. Muhammad Afzal Khan Dhandla, Mr. Nawab Sardar Riaz Mahmood Khan Mazari and Ms. Nuzrat Pathan MNAs. Fourth amendment stands in the name of Ms. Saira Bano and Maulana Abdul Akbar Chitrali MNAs. Fifth amendment standing in the name of Mr. Salahuddin, Engineer Sabir Hussain Qaim Khani and Mr. Muhammad Abu Bakr MNAs. Now I call upon Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to move the amendment. Shukriya, Janab Speaker. I beg to move that in the Finance Bill 2023, as introduced in the National Assembly, in Clause 3, the following clauses and following amendments be made for sub-clause 11. Janab Speaker, ये सारी तफसील जो है, including part Roman 5, capital B, table 2, and then Janab Speaker, ये comprehensive डिटेल जो है ले कर दी गई है तमाम मेंबरान के सामने, और ये should be treated as they have seen it, and unless you want to read all the 3 pages, they're all available, sir.
क्या फाजिल मेंबरान के सामने मौजूद है टेबल के ऊपर, तो मेरा ख्याल ठीक है जी, इट शुड बी टेकन एज रेड एंड इट शुड बी द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। पड़ी हुई है। upon Dr. Mohammad Afzal Khan Dandla, Mr. Nawab Sher, not present. Ji, not present. Now I call upon Ms. Wajiha Kamar, not present. Mr. Mohammad Afzal Khan Dandla, not present. Mr. Nawab Sher Wasir, not present. Sardar Riaz Mahmood, not present. Nuzat Pathan, not present. Now I call upon Ms. Saira Bano, not present. Maulana Abdul Akbar Chitrali to move the amendment. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असेंबली में पेश करदा सूरत में बाली बेल 2023 में शिक नंबर 3 में ज़ैल शिक 1 हज़फ कर दी जाए। Thank you. Now I call upon Salahuddin, present. जी, in the finance bill 2000 as introduced in the National Assembly in class 3 subclass 17 paragraph C of subparagraph following new subparagraph 3A shall be inserted, namely against serial number 108 and entries relating thereto 2, 3, 4, and 5. New items shall be inserted, namely 11 steel tape, steel wire, 13 binder yarn, or local optical fiber cable. जी सलाउद्दीन साहब। इंडस्ट्री उसके साथ टेलीकॉम सेक्टर मुल्क की मईशत को संभालने के लिए तो माशी के लिए जहां एग्रीकल्चर को इंसेंटिव दी हैं उसके साथ साथ नेट सर्विसेज के यूं तो दुनिया से की जाती है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटी महंगी पड़ रही है पाकिस्तान, जिसके नतीजे में तो इसकी बहुत सस्ती पड़ती है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जो 11% ड्यूटी लगाई गई है उसके साथ 2.5 ड्यूटी लगाई गई है उसे सके, सेक्टर फरोग पा सके। आगे की तरफ जो मुल्क के वजीर आजम ने मौजूदा हुकूमत ने पेश किया है उसकी तरफ खुशहाली बढ़ सके पाकिस्तान, और दुनिया में
इस हवाले से दीगर जो ममालिक हैं उनसे मुकाबला कर सकें। इस लिए में कि इस ड्यूटी को खत्म ही कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान में मुकामी तौर पर जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो मैन्युफैक्चरिंग उसको प्रमोट किया जा सके। राना अब्दुल अकबर चित्रा। जनाब स्पीकर है, हम इस अमेंडमेंट के को रोकना चाहते हैं। जो सियासी ब्लैकमेलिंग और लोगों, वो ये है जनाब इसमें इस सिस्टम को एक घर में जहां कोई कहे कि इसमें मुनशियात या दीगर गैर कानूनी चीजें रखी गई हैं, तो कस्टम बगैर यहाँ रखे गए हैं, तो वहाँ छापा वो मार सकता है और जा सकता है। इससे जनाब स्पीकर वो जाली जब उसके खिलाफ हर एक इसको इस्तेमाल, हमने ये कहा है कि देखें जो है वो है ये ब्लैकमेलिंग का रास्ता खुलवा रहे हैं। गाली में पड़ जाएगा जनाब। Thank you. Thank you. Now I put it as moved by Senator Muhammad Ishaq. The the amendment is Maulana Abdul Sahab to the House. The question is that the amendment as moved. All those أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر जी
Those in favor of it, say aye. No. I think the noes have it, and consequently the amendment is rejected. Now I put the amendment as moved by Mr. Salah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in जी नहीं जी बस एक ही मूव करता है ना जी जी जनाब खालिद साहब का माइक ऑन करें सर मैं चाहता हूं कि जिस तरह मिनिस्टर फाइनेंस ने के हवाले से कहा क्योंकि ये इंतहाई अहम रैली थी जिसका मकसद ये था मुल्क में जो मजीद इन्वेस्टमेंट लेके आए तो इसको सर बजाय वोटिंग कराने के तो खालिद साहब आप मिनिस्टर साहब से बात कर लें विड्रॉ कर लें इसको पहले हम बात करें ऐसे विड्रॉ नहीं आप तो ट्रेजरी बेंचेस के आप बैठ के बात करें अपने मिनिस्टर साहब से तो सर बोल दें सर टाइम दे दें तो इसको भी विड्रॉ जी मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू जनाब स्पीकर मैं समझ मैंने नोट कर लिया है प्रोसेस है जिसको दोनों जो पहले डीएपी पे या फाटा पे बात हुई वो उसके लिए कोई अमेंडमेंट मूव नहीं की थी बिल में और बिल अभी हमने प्रोसेस नहीं किया था होगी हम इसको बात करेंगे एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ग्रोथ को आगे लेके जाने के लिए हम खुद समझते हैं कि एक प्रोसेस मुकम्मल करना होगा वोटिंग होगी बाकी मैंने वैसे ही नोट कर लिया है और ना भी कहते क्योंकि स्पीकर अगर मैंने वो नेशन देनी है और एक तकरीर करनी है वो मेरा ख्याल है वो दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट बट आई हैव नोटेड इट राइट सलाउद्दीन आप ये विड्रॉ कर लीजिएगा तो ये मामला जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है ना कि दिस इज ऑलरेडी इन हिज माइंड के फिर वो ओके ठीक है नाउ आई पुट द अमेंडमेंट by Mr. Salahuddin and others to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. Those in favor of it may say all those against it. The amendment is rejected. Put clause all those in favor aye. All those against, I think the ayes have it and bill. Clause 4 amendments. There are also Senate recommendation on clause 4. Amendments in clause 4. The name of Ms. Dr. Mohammad Afzal Khan Dandla and Ms. Nawab Sher, Kamar, Dr. Muhammad and our Minister for Finance to move the amendment. 2023 as introduced in the National Assembly in the following new sub-clause shall be inserted, namely 1A in section 3 4 shall be substituted shall be inserted, namely alternate dispute. स्पीकर आपको याद होगा कि मैंने इस हवाले से ये पूरी इसमें
Right, sir. Thank you, ji. Call upon Ms. Asya Azim, Dr. Mohammed not present. Now I call upon Ms. Wajiha Kamar, not present. Dr. Muhammad Afzal Khan Dhandla, not present. Mr. Nawab Sher, not present. Sardar Riaz Mahmood Khan Mazari, not present. Mr. Nuzat Pathan, not present. Minister for Finance, अच्छा ये तो now I put as be adopted. Against it may say no. I think the ayes have it and amendment is adopted. No, ये तो I put clause 4 as amended to the House. The question is that clause 4 as amended do oh, I think the ayes have it and consequently clause 4 as amended stands part of the bill. Clause 5 amendments. Clause 5, first Minister for Revenue, second amendment standing in the name of Ms. Muhammad Afzal Khan Dhandla, Mr. Nawab Sher, Senator Riaz Mahmood Khan Mazari, and Finance and Revenue to move the amendment. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर as it clause 5 the existing paragraph will be renumbered as paragraph I, and in sub 2 the following shall be substituted. The whole detail has been placed on. Thank you. Taken as read. It's part of the record. Now I call upon Ms. Wajiha Kamar, not present. Mr. Muhammad Afzal Khan. Pathan, not present. Now, I Senator Muhammad Ishaq Dar, Finance and Revenue. The question is adopted. All those against it may say no. I think consequently the amendment is adopted. Clause 6. Clause कहाँ है? No, I put clause 5 as amended to the House. 5 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 5 as amended stand part of the bill. Conditions on clause 6. There are 6 amendments in clause Muhammad Ishaq Dar. Second amendment Dr. Muhammad Afzal Khan Dhandla and Mr. Nawab Sher Wasir. Third amendment standing Dhandla, Mr. Nawab Sher Wasir, Sardar Riaz Mahmood Khan Mazari and Ms. Nuzat Pathan Manez. Fourth standing in the name of Rabano and Fifth amendment standing of Dr. Nisar Ahmad Shima. Sixth amendment standing in the name of Maulana Abdullah Mohsen Dawa. Sardar, Minister for Finance and Revenue to move the amendment. Speaker, I beg to move that in the finance bill as introduced clause 6, sorry, my apology. Sir, I beg to move National Assembly in clause 6. Mr. Speaker, whole detail has been laid out on the floor. Taken as read and is part of the record.
Now I call upon Miss Asia Azim, not present. Dr. Muhammad Afzal Khan Dandla, not present. Mr. Nawaz Bashir, not present. Again, now I call upon Miss Wajia Kamar, not present. Not Nawab Sheikh not present. Miss Nuzat Pathan, not present. Now I call upon Miss Saira Bano, not present. Maulana Abdul Akbar Chitrali to move the amendment. स्पीकर मैं तहरीक पेश करता हूं कि कौमी असम्बली में 2023 में शिक 3 में ज़ैली शिकात 8 और 19 हज़फ कर दी जाएं और ज़ैली शिक जीम में शिक दाल हज़फ कर दी जाए। To move the amendment. Uh, 2023 as introduced in the National Assembly in class 6 in subclass 24 in paragraph A in subparagraph 1 after the entry Roman 16th the following new entry Roman 17th shall be inserted, namely Rawalpindi Eye Donors Organization. इसका जब स्पीकर अगर आप इजाज़त दें तो मैंने ये जब फ्रांस मिनिस्टर साहब की खिदमत में भी ये गुजारिश की थी कि चंद NGOs समाजी खिदमत सर अंजाम देने वाली NGOs जिनको टैक्स एग्जम्पशन दी जाती है उनमें ये रावलपिंडी आई डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन जिसकी गिरा कदर खिदमत से पूरा इलाका उसका मद्दा और मोतरफ है। हज़ार लोगों को कॉर्निया की ट्रांसप्लांट के ज़रिए जो वो श्रीलंका से मंगवाते हैं अपने ख़र्चे पे हज़ार लोगों को बिराई की नेमत वो लौटा चुके हैं और इस रावलपिंडी आई डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स एग्जम्पशन वाली ये जो है NGOs उनमें उस लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। बहुत मेहरबानी। Now I call upon Maulana Abdul Akbar Chitrali and Mohsin Dawar to move the amendment. जी कौन करेंगे मूव, मौलाना साहब या मोहसिन डावर करेंगे? बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। 2023 is introduced in the national subclass 24 in paragraph A in subparagraph 3 for expression 2024 the expression 2033 shall be substituted. Thank you. You oppose it? मैं फिर देता हूँ आपको, फिर उसके बाद दूँ। जी अपोज। जी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। जनाब स्पीकर यहाँ 2 अमेंडमेंट लाए हैं। एक अमेंडमेंट यह है कि ज्योमेट्री बॉक्स की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दी गई है। खदशा यह है कि यह एक मखसूस कारोबारी अफराद को फ़ायदा किया गया है। अगर तालीम के साथ हमारी दिलचस्पी है, दिलचस्पी के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन अपने अंदरून मुल्क जो हमारी सनअत है इसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स अशिया को तैयार करने के लिए जो हमारे इदारे हैं, हमारे कारखाने हैं, हमारे दीगर वो हैं बनाते के बजाय उनकी छूट देना बात नहीं आती, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया। नंबर 1। दूसरा हमारा अमेंडमेंट था, वो अमेंडमेंट ये था कि जिस तरह यहाँ मौलाना असद महमूद साहब ने भी फरमाया कि फाटा के साथ जो मुआहदा कर गए थे लेकिन अभी वो सहूलियात नहीं दी गई। 10 अरब रुपए सालाना वहां तरक्याती कामों के लिए खर्च। अब ये इस वक्त तकरीबन कोई 30-35 या 52 अरब रुपए हमने इस साल रखे हैं। बहरहाल लेकिन ये फाटा और पाटा दोनों इलाके जो है यहाँ रोजगार के मौके नहीं है और यहाँ गुर्बत है, यहाँ पासमानदगी है, यहाँ के नौजवान बिल्कुल मुलाजमतों से महरूम हैं। तो हम
कि इसको 2033 तक और यह हमारे ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Now I put the amendment as moved by Senator Mohammad Ishaq, Minister for Finance and Revenue. The question is that the amendment as moved be. All those in favor of it may say aye. All those against it, I think the ayes have it. The amendment is adopted. The amendment Nisar Ahmed Shima to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of Ahmed Shima? जी, I oppose, sir. Minister. No, I put it again to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it. The amendment is rejected. Now, the question is that the amendment as moved be adopted. It may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it. Rejected. Amended to the House. चित्राली साहब ने बोल दिया है. रिजेक्ट ही होनी है, फिर मैं आपको आगे चांस दे देता हूं. आप बोलिए. जी जनाब स्पीकर, जब अमेंडमेंट आई है तो थोड़ा हमें पर एक्सप्लेन भी करने दे कि भाई ये है चीज. गुजारिश यही कि आज चित्राली साहब ने कर दी थी ना. हाँ जी, मैंने कहा आप दोनों ने मिलकर डाली थी ये अमेंडमेंट. ठीक है. एंड वन ऑफ यू हैज एक्सप्लेन. ठीक है ना. जनाब स्पीकर, उसी कमेटी की रिपोर्ट थी, उसी की रिकमेंडेशन थी जो सरताज अजीज साहब जिसकी सरदाई कर रहे थे कि 100 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए हर साल मुख्तस करने होंगे. तो ना तो 5 साल में वो हुआ. मैक्सिमम हम 40 अरब रुपए करोगे. दूसरी चीज जो हुई, हमें वो फाटा सूबे के हवाले तो कर दिया, लेकिन 4 साल नहीं दी गई. वहां पर गवर्नेंस किस तरीके से बेहतर हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बेहतर हो सकता है, उस चीज पे भी तवज्जो नहीं दी गई. और ये जो 4 साल की जो एग्जेम्पशन थी, लोगों को वहां पर सच फायदा हुआ नहीं. स्टेज से जोन था जैसे फायदा पहुंचा ही नहीं है. तो हमारी गुजारिश ये थी कि अगर एक तो अदरवाइज भी हमें मिसाल है वो बजट में नहीं मिलता. हमारी गुजारिश ये होगी, पहले दिन से हमारी ये थी कि अपना शेयर हमारा वैल्यूएट हो. लेकिन बहरहाल बात है, फिलहाल अमेंडमेंट इस हवाले से है कि ये जो टैक्स एग्जेम्पशन थी जनाब स्पीकर, वो एटलीस्ट 10 साल होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं होंगी तो मेरे ख्याल में लोगों की जो ग्रीवेंसेस थी और वो पूरे नहीं हुए और वो फिर खदशात लोगों की शिकायत. साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और हाउस ने इसको रिजेक्ट कर दिया. नहीं, वो मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, अगर आप चाहते हैं हम दोबारा कर लेते हैं. जी जी. नो
motion dawar. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think as amended to the House. The question is, bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think there is a consequently clause 6 amendments. There are also Senate recommendation on clause 7. There are 3 amendments in clause 7. The first amendment standing in the name of Senator Muhammad Ishaq Dar. Amendment standing in the names of Mr. Nisar Ahmad Chima, Dr. Khurshid Ahmad Junejo, Ms. Zahra Wadood Fatimi, and Ms. Naz Baloch MNAs. Third amendment standing in the name of Ms. Wajiha Kamar, Dr. Muhammad Afzal Khan Dhandla, Mr. Nawab Sher Wasir, Sardar Riaz Mahmood Khan MNAs. Now I call upon Senator Sir, clause number 8. I beg to move introduce an assembly after the clause 7, the following clause 7. Oh, serial number 6. Right, ji. And bill as introduced in the National Assembly in clause 7 वो सारी तफसील और लेकर दी if it can be taken as all the details, sir. Now I call upon Dr. Nisar Ahmad Chima. Thank you, sir. I rise to move that in the Finance Bill 2023, clause 4, the following new paragraph A shall be added, and the existing paragraphs A and B shall be renumbered as B and C. I call upon Wajia Kamar, Muhammad Afzal Khan Dhandla, Mahmood Khan Mazari, Ms. Nuzul not present. Do you oppose it? Oppose, sir. Nisar Ahmad Chima. Chima sahab ne ki. I oppose this. Ji. Now I put the amendment as moved by Mr. Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue. जब आपका टर्न आएगा तो फिर आपको बोलने का मौका देंगे. ये जो the question is that the amendment as moved by all those in favor of it may say aye. All those against it, I think the ayes have it, and consequently the amendment. Now I put the amendment as moved by Dr. Nisar Ahmad Chima and others to the House. इस पे आपको बात करना चाहते हैं? जी मुख्तसर सी बात कर दीजिए. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. इसका मकसद ये है कि जो इस पे टैक्स मुक्त आयद किए गए हैं उनमें कुछ ताबीर तजवीज़ की गई हैं. मसला ये है कि जो वाटर है, सिंपल वाटर, खालिस पानी जिसमें कोई शुगर या स्वीटनिंग कोई ऐसा एलिमेंट शामिल नहीं है, जो हैं जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और जो मोटापे का, डायबिटीज़ का और बेशुमार बीमारियों का, जिनमें दिल की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां, जिगर की बीमारियां शामिल हैं, उसका बायस बन रहे हैं, उन पे टैक्स जो है वो 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाए. हिंदुस्तान में 40% है, मिडिल ईस्ट के कई ममालिक में ये टैक्स 50% है. हम कि ये टैक्स जो है बढ़ा हो.
मैं मोअज़्ज़ज़ रुकन के ये भी हमें मद्देनजर रखने थी, शायद देखा होगा किया जाए तो पहले ग्रेजुअल जो इंक्रीज है वो मुनासिब है। 10 से हमने 20 का किया है। मोअज़्ज़ज़ रुकन अल्लाह करे कि ये अगले बजट में ये भी इधर हो, हम भी फिर 20 को देखेंगे, 30 करने 40। इस वक्त मैं इनको अपोज कर रहा हूँ जी, 10 से 20 करें, 10 से 40 बहुत ज्यादा स्टीप। आई अपोज इट। No, I put the amendment as moved by Sar Ahmad Shima and others in the House. The amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say no, and consequently the amendment is rejected. No, I put clause 7 as amended to the House. The question is that clause 7 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it, all those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 7 as amended stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 8 standing in the name of Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue. Now I call upon Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to move his amendment. Janaab Speaker, shukriya. I beg to move that in the Finance Bill 2023, as introduced in the National Assembly, new clause 8 seal distributes सामने है. If that can be taken as read, आप kindly. And consequently the amendment is adopted and new clause 8 stand part of the bill. The first schedule amendment. There is an amendment in the first schedule standing in the name of Senator. Now I call upon Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance. Schedule. I beg to move that the first schedule to the Finance Bill 2023, the following shall be substituted, namely schedule section 16. Sir, puri tafsil, sir, please kind agar le. Taken as read and is part of the record. Now I put the amendment as moved by Minister for Finance and Revenue to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and now I put the first schedule as amended to the House. The question is that first schedule as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. Preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and short title do stand. Say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. So clause 1 preamble stand part of the bill. Minister for Finance and Revenue to move item number 6. Shukriya, Janaab Speaker. I beg to move that a bill to give financial proposals of the year beginning on the first day of July 2023, Finance Bill 20 passed. Bill to give effect to the financial proposal of the government for the year 2023. Finance Bill 2023 be passed.
All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. जी, item number 7 together. Engineer Kaim Khani. सर बहुत शुक्रिया सर। आपको सर ये मुबारकबाद दूंगा कि जिस सब्र तहम्मुल के साथ ये कार्रवाई 2 दिन चली और बजट कल हमने देखा कि कोई 5.5 घंटे के करीब आप बैठे और आपने पूरे बजट को पास किया। फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी मुबारकबाद बात बर्दाश्त किया, किसी का अच्छा जवाब दिया, किसी पे हौसला अफजा बात की, किसी को ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, किसी को सुनकर ऐसे निकाल तवज्जो एक चीज के साथ दिलाना चाहूंगा, सिर्फ एक जुमले के साथ। पेंशनर्स को जरूर आप जो भी इसके कवानीन बना रहे हैं, एक तो सर इसको महंगाई हिसाब से करना चाहिए, जिस रेशो से तनख्वाह बढ़ाई जा रही है उसी हिसाब से पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाई जाए। दूसरा उसका निजाम तो बेहतर करें, जो भी हम उनको दे रहे हैं उसके लेने के लिए उनको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, शक्ल मिल नहीं पाती। दूसरा सर मैं नजर की बात हुई, हम सपोर्ट करते हैं कि यकीन देखा जाना चाहिए, जिम्मेदारियां हम भी करते हैं और उससे इफेक्ट पूरे मुल्क पर होता है। तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं सर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जी मैं आपकी तवज्जो हमारे आइन की तरफ दिलाना चाहता हूं कि सेलिब्रेशन ने बड़े जबरदस्त में इस हाल ने और सब लोगों ने मनाई, और शायद पाकिस्तान आइन सिर्फ एक कागज के टुकड़े का नाम और इसको मजीद रहेंगे करते रहेंगे। इसका सर एक आर्टिकल है 88। स्पीकर साहब, जी कायम खानी साहब, मैं सर तवज्जो चाहूंगा, हमारे फाजिल दोस्त जो आपके पास खड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरूरी एक बात है तो हम सब तवज्जो दें। आर्टिकल 88 कहता है, द एक्सपेंडिचर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट विद इन ऑथोराइज्ड appropriation shall be controlled by the national assembly, or as the case may be the senate acting on the advice of its finance committee। सर ये वहदत की जमानत है, इसमें हर जगह से पाकिस्तान के कोने कोने से नुमाइंदगी मौजूद है। ये 25 करोड़ अवाम का एक ऐसा इदारा है जो उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़, और सर जब हम यहाँ पे बैठ के पूरे इदारों के अपने बजट को, जैसे अभी फाइनेंस बिल पास हुआ इसको पास करते हैं, ये आइन हमें इख्तियार देता है। हमारे पीएसी के चेयरमैन ने बताया कई इदारों लाभ लेना चाह रहे हैं, पीएसी में लाना चाह रहे हैं, जिसकी आइन इजाजत देता है, वो उनको लाने नहीं देते। अपनी मर्जी का बजट लेकिन फाइनेंस होंगे उनका मन ऑन तस्लीम किया जाता है, चाहे वो कुछ पेश हुआ, गो के हम ट्रेजरी बेंचेस से हैं, लेकिन जब हमने देखा कोई चीज गलत है उसकी निशानदेही की, आवाज उठाई, बेहतर बनाया। अभी आपके सामने मैंने पेंशनर्स के लिए बात की, इसीलिए की कि हम समझते हैं कि जो चीज जरूरी है सर क्या है, ऐवान को इतना इख्तियार नहीं है कि अपना बजट खुद बनाए। डिमांड करता है, लोग बैठे हुए फाइनेंस में जिनकी एक मखसूस सोच है, जो उससे आगे नहीं बढ़ते वो उसको रद्द कर देते हैं, उसमें कट लगा देते हैं।
करती है कि अपना बजट, असेंबली के अखराजात को वो देखे, इसकी जो एक खुद मुख्तारी है पार्लियामेंट की, इसको बरकरार रखते हुए जो अब तक आपकी पॉलिसी चली है कि हम किफायत शवारी के साथ चल रहे हैं, हम अखराजात कम करके चल रहे हैं, हमने मीटिंग्स को कम किया है, आपने स्टेशन आउट ऑफ रोका है, मीटिंग्स में मुल्क दौरों को मुख्तसर किया है। इसके अलावा जो आप हमने असेंबली 2-3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जो आपकी सरबराही में हुई, वो सर कोई ऐसे मौके अपने दोस्तों की है किया है, इसको दोबारा लाया जाए, उन ऑफिसर्स को भी बुलाया जाए असेंबली कमेटी में, उनसे असेंबली के जो बजट को मन ऑन पास किया जाना चाहिए। दूसरा सर एक मुख्तसर बात करूं, गवर्नमेंट ने खुद फाइनेंस शायद अपनी मिनिस्ट्री में भी किया है, ये हमारे सिर्फ एक्सरसाइज बजट की, वैसे तो मार्च से हमारा जो पिछले 9 तारीख को जब बजट पेश हुआ उसके बाद से लेके और आज इनको इसका चाहिए, वैसे भी करने वालों का ख्याल रखते हैं, उनकी मेहनत पे उनको फिर यकीनन वो एक मौका समझते हैं कि उनके खदमात को सराहा जा रहा है। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू इसकी रूलिंग दें और को मुकर्रर किया जाए। ये ऐसा है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब प्लीज आप जरा रिस्पॉन्स करेंगे। जी सर। ऑनरेबल मेंबर ने जो नेशनल असेंबली के ये मेंबर भी इनकी जमात जो है वो हुकूमत का के बाद ऑब्वियसली ये कट मोशंस हो गया, वो भी बिल भी पास हो गया। आई एम ग्रेटफुल टू द बजट सेशन उस वक्त मैं बजट आपकी जो फाइनेंस कमेटी जी मिनिस्टर साहब नहीं है, मैंने बात ये है कि असेंबली इनके जो बात नहीं है, आप रूलिंग दें, इनके ऑफिसर्स आ जाएं, बैठ के डिस्कस करें, जो वो सब जनाब स्पीकर, मैं समझा, लेट मी जस्ट पासिंग थ्रू द मोस्ट चैलेंजिंग, और इसकी सारी जो खराबी की जड़ है वो पिछले बैनुल अक़वामी 47वीं मईशत बन गई। ठीक करना पाकिस्तान को दोबारा वो जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था हर हफ्ते, वो उसको रोकना था कि नहीं रोकना था। तो एक स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी मेजर्स हुए, इनकी जमात उसमें शामिल थी, वो इम्प्लीमेंट किया गया कि वो जो
ऑस्टेरिटी मेजर्स के बाद लेट्स बी फेयर टू देम कि जब ऑस्टेरिटी मेजर्स ऐसे पीएम्स को ये एडवाइस किया गया काबीना ने कि जो कोई मजबूर है वो जरूर लिख के दे दे कि मैंने लेना है, लेकिन मेजॉरिटी ने वो उसको बंद कर दिया और वो लेने नहीं एक बात ये। उसके बाद जब हम मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये 7वीं दफा उस काम को कर रहा हूँ, इसको डिविजन्स को ये फरवरी से एंगेज करती है और उसके बाद रिवाइज होते होते सैलरीज का जब इम्पैक्ट आना था बहुत ज्यादा, जो हमने कैलकुलेट किया तो फाइनल जो 3% थी। थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्ड पे एक आधी चीज चली गई, दूसरी आनी चाहिए। जो फाइनेंस कमेटी है, मैं एहतराम करता हूं, मैं भी उनका हिस्सा रहा हूं, आज भी हिस्सा हूं, मेंबर हूं आपका एक्स ऑफिशियो। क्या 98% उसमें इंक्रीज पिछले साल की बजट के ऊपर मैसेज अच्छा, क्या उसको आपको गुजारिश की आप उसको रिड्यूस। अब हाउस पे मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। तो भाई बात यह है कि हम पूरे मुल्क पूरी मिनिस्ट्रीज को तो हम कहें कि जी आप ना करें, लेकिन ये हाउस की एक जैसे चेयरमैन बिल घूम रहे हैं और तो जनाब ख्याल है उस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। आपके अप्रूवल से हमने किया है और ये फिर आपने रेटिफाई सेनेट फाइनेंस कमेटी में भी आई एम श्योर किया होगा रेगुलराइज। तो ये आपकी ये मैंने खुद नहीं किया इसको, जी जी मैंने आपकी इजाजत से किया है और मेरे parliamentarian भाई cannot have the entire increase and अदारे हैं वो उसके ऊपर, तो मैं मशकूर हूँ फाइनेंस कमेटी में इसको दोबारा रखेंगे और आपको सारी सूरत मेरा अभ्यास किसी और तरफ चली जाएगी। आप तशरीफ रखें ना, फिर हम बात करेंगे। जी कायम खानी साहब। सर क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि बात ऑन रिकॉर्ड अखराजात को बचत की तरफ लेके गए, हमने उसको कम से कम रखा है। हम पूरे मुल्क का सोचते हैं, अपना नहीं सोचते। जो अभी भी बजट हमने दिया था उसमें मेंबर्स के ऑनरिया नहीं था, मेंबर की फैसिलिटेशन नहीं थी, मेंबर्स के लिए कुछ नहीं था, अपनी कारकर्दगी अपनी कैपेसिटी को चेक करने के लिए काम था। मैं इस बात को आपकी सरबराही में हमेशा फाइनेंस कमेटी का खुद का है, फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। कायम खानी साहब ने बहुत अच्छी हमेशा बात करते हैं। आइटम नंबर 9 ऑन रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट expenditure charged upon the federal consolidated fund for the financial year 2021, 2022, 2023 and 2024. नहीं जी, supplementary demands. Demand number 3, Minister for Finance and Revenue to move demand number 3. Number 2. I beg to move. जनाब अगर आप याद तो स्पीकर साहब एक सेंटेंस कह दो जी। जी जी, ये पीएसटीपी में मैंने फ्लोर के हवाले से और बलूचिस्तान हवाले से कुछ स्कीमें ऐड की गई थी। वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट डे पे 9 जून को यानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उसमें अमेंडमेंट्स कर दी गई। तो सेक्रेटरी चली गई है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ताकि अपने फॉरेन डिस्ट्रीब्यूट कर 23 कोरिजेंडम ने बनवा के मैं लाया हूं जी। तो ये प्लानिंग मिनिस्टर साहब की इजाजत से ये डिस्ट्रीब्यूट कर I beg to move supplementary sum not exceeding 22,262,000। एक सेकंड सर,
22। हाँ जी, ये देख लीजिए हो रही है 2021 और 22। एक सेकंड यार, दिखाओ यार व्हाट्सएप। अब मैं जनाब भाई जी मैंने जी ठीक है। आइटम नंबर 9। Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 125,819,000 be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year. The question is that the supplementary demand has moved. It may say aye, it may say no. I think the ayes have it and demand number 4. Minister for Finance to move demand. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 1 billion rupees be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year 30 June 2022 in respect of Intelligence Bureau demand number 4. The question is that the supplementary demand has moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say demand number 11. Minister for Finance and Revenue to move demand number 11. जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। I beg to move that supplementary sum not exceeding 22,262,000 rupees be granted to federal government to meet expenditure ended 30th June 2020 of investment demand number 11. The question is that the supplementary demand has moved be granted. Those in favor of it may say aye. May say no. And consequently the demand is granted. Number 13, Mr. Mr. Speaker, I beg to move that that is granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 2022 of aviation division demand number 13. Granted. All those against it may say no. Demand is granted. Demand number 17, Minister for Finance. Speaker, 411,000 school policy demand number 17. Demand is granted. The supplementary sum not exceeding 26 million rupees granted to the federal government to meet expenditure Consequently, the demand is granted. Demand number 20, Minister for granted to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect of poverty alleviation and social safety division demand number 20. The question is that the supplementary demand as moved be granted. In favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently. Demand number 21. 19 be granted to meet expenditure during financial year ending 30 Nazir income support program demand. All those in favor. I think they have it and consequently. 23, Minister for Finance to move. Speaker, I beg to move that is 10,200,000 supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye.
All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 24, Minister for Finance to move. Now, Mr. Speaker, I beg to move that its supplementary sum not exceeding 600 June 22 respect to demand number 24. The question is that the supplementary demand has moved be in favor of it. Hearing 30 June 2022 in respect of demand number 28. The question is aye. No. Not exceeding 2 billion. Demand number May say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 30, Minister for all those in favor of it. No, I think the demand is granted. Minister for Finance. Government to meet The question is that this demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently back to move. say no. I think currently the demand is granted. Demand number 35. Minister for Finance to move demand number 35. Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 204 billion rupees be granted to the federal government. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 36, Minister for Finance. Number 36. Not exceeding 81 million. Demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. Hearing 30 June 2022 in respect of federal education and professional training division demand number 37.
The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it, all those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the question is as moved be adopted. All those in favor say aye. All those against it may say no. And consequently, the demand number 41. Minister for Finance to move demand number 1,187,000 rupees 2022 in respect of I think it is added, and consequently the demand is granted. Demand number 42, Minister for Finance to be granted to in respect to other expenditure of finance division, demand number 42. the question is the supplementary demand as moved be adopted. Granted. Minister for Finance and Revenue to Sum not exceeding 900 million rupees be granted Journal of Accounts, demand number 43. the question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it. Our Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 78 billion rupees be granted to the federal government to meet expenditure during financial year ending 30 June 2022 in respect to Question is as moved be granted. No, I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 47, Minister for Finance and Revenue to move demand to the demand number 46. granted. All those in favor, all those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand for Finance to move demand number 48. I beg to move that a supplementary sum not exceeding 275 million rupees be granted to the federal government to meet expenditure year ending 30 June 2022 in respect of 8. The question is that the supplementary demand as moved be against it may say no. I think the ayes have it. The demand is granted. Demand number 49, Minister for Finance. 3,475 million rupees The question is that the supplementary demand be adopted. Say aye. Demand number 50. Speaker, supplementary sum not exceeding 75,000 rupees be granted year ending 30 June 2022 in respect of Housing and Works Division. The question is the demand as moved be granted. All those aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the demand is granted. Demand number 52, Minister for Finance to move. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum 1,600,000 rupees be granted to the federal
during financial year ending 30th June 2022 in respect of industries and production division demand number 52. The question is that the